Hello, viewers of the tube. It's your guy from Chico Crypto. No, it's not. मेरे को चीको क्रिप्टो बोलने का बहुत मन था बिकॉज सच ए क्यूट नेम फॉर यूट्यूब चैनल। यार कितना सही नाम रखा उसने, चीको क्रिप्टो। और उसका जब भी इंट्रो देता ना, अगेन फ्रॉम माय बैकयार्ड, नॉट लाइव, नॉट इन द स्टूडियो, मेरा बहुत सही इंट्रो लगता है उस बंदे का, चीको क्रिप्टो। एनीवे, बैकड्रॉप से दिख गया होगा, विल स्मिथ ने एक अपॉलजी वीडियो रिलीज किया फॉर हिज शिट बिहेवियर, हिज वीक boneless, spineless behavior. अब इस पॉइंट पे तो मुझे अब दया नहीं लगी इतना बोल के उसके ऊपर कि यार बेचारा नहीं हो संभल रही उससे ज़िंदगी, तो कितना ही गंदा बोल के। ऑफ कोर्स ही डिजर्व्स ऑल द बैड माउथिंग फॉर श्योर, पर फिर दया भी आने लग जाती है कि अब इससे नहीं हो रहा तो अब मान लेते हैं कि भाई गधा ही है, क्या करें। ओके, पर देखते हैं क्या किया इसने। 5 दिन पहले आ चुका है, मैं अब देख रहा हूँ। आई एम एन इडियट बट स्टिल लेट्स गो। कपड़े अच्छे हैं, बैकड्रॉप अच्छा है इसका भी। लेट्स सी व्हाट डज ही से। It's been a minute. Over the last few months I've been doing a lot of, it's been a minute and personal work. See, देखो सबसे गंदी बात मुझे विल स्मिथ क्या लगता है, ये भौंकता इतना है, he barks this much, और उसके एक्शंस में होता इतना है, like he is a नीच इंसान बट बातें करता है महान। नीच कर्म महान शब्दावली that's what he is. Only words, only and only words, and nothing in the action, nothing authentic action that backs the words. ये मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे यह सबको इरिटेट करती है हम सबको, कि विल स्मिथ भौंकता इतना क्यों है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, फिर बिल्कुल ही नेगेटिव टॉक्सिक एक्शन करता है। टॉक्सिसिटी, लाइक उसके वीडियोस से टॉक्सिसिटी कहीं झलकती नहीं है। और फिर उसका एक IRL वीडियो आता है IRL, जिसमें वो टॉक्सिसिटी के अलावा कुछ दिखाते ही नहीं। व्हाट द फक। एनीवे, तो ये पहला शॉट ही उसका एक प्रूफ है कि फिर से भौंक शुरू कर दी। पर्सनल वर्क, तो इतना पर्सनल वर्क इतने टाइम से करते आ रहे हैं, और बुढ़ापे में तूने ऐसा काम किया जो कि जवान करते हैं। लाइक इस एज तक तो तुझे इतना ज़्यादा मैच्योर हो जाना चाहिए था कि लाइक आई एम मोर मैच्योर देन यू मैन। क्या हीरो बनेगा अभी तू। ओके, you asked a lot of fair questions. Fucking hell, man. See, you asked a lot of questions होता ना, बहुत सही रहता। a lot of fair questions बोला है, मतलब कि like he is in no position to judge anybody. जो काम उसने किया ना, वो किसी पोजीशन पे नहीं है कि वो जज करे किसी को, क्योंकि उसकी खुद के इतने गंदे एक्शन है, फिर भी यहाँ पे उसने जज किया है। यू आस्क्ड अ लॉट ऑफ फेयर क्वेश्चंस। वेट अ फकिंग मिनट, यू वांट टू डिसाइड व्हाट्स फेयर और नॉट। तू डिसाइड करेगा कि फेयर होता क्या है। तू अलाउड नहीं है टू यूज द वर्ड फेयर, बिकॉज तूने सबसे ज़्यादा अनफेयर काम किया है। हद है भाई, हद। देखो भाई, जोक था, जोक भी चल, जोक वर्ड का मतलब कुछ नहीं होता। मैं तो कहूँगा इंसल्ट थी, ठीक है भाई। इंसल्ट लेनी आनी चाहिए भाई। उसने उसकी बीवी को एक उसकी डिजीज़ के ऊपर इंसल्ट की, तो भाई डिजीज़ के ऊपर तो इंसल्ट ही होगी ना। डिजीज़ किसी इंसान को क्यों होती है। हम आज के एनवायरनमेंट में बहुत सेंसिटिव, पर मेरे को बताओ, कोई इंसान गिरता है गिरना, देखो जो हम क्या बोलते हैं कि तबीयत गिर गई, जब कोई बीमार होता है यही तो होता है, तबीयत गिर गई। और एक चलता चलता आदमी भी गिर जाए तो उसको भी गिरना कहते हैं। जबकि जब चलता आदमी गिर जाए तब हम उसको उसकी गलती बताते हैं, भाई तेरी गलती थी। पर किसी की तबीयत गिर जाए तो उसकी गलती नहीं है, तो इसको हो गया, नो।
तुमको नहीं पता था तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी बॉडी के साथ क्या चल रहा है, इसलिए तुम बीमार पड़ गए. दैट्स द ओनली रीज़न कि तुम बीमार पड़ते हो. अगर तुम अपनी बॉडी को, तुमको पता है कि हर सेकंड क्या हो रहा है, क्या आ रहा है बॉडी में, क्या जा रहा है, कौन से एनवायरनमेंट में हो, क्या करना चाहिए, तो तुम सेव कर सकते हो. एक बच्चा छोटे से बड़ा कैसे हो जाता है? क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको हर सेकंड संभालते हैं ना, कि यहाँ पे लग जाएगा, बिजली है, आग है, पत्थर है, उसका एनवायरनमेंट स्टडी करके बचाते हैं, तभी तो आता है. ये तो बच्चे को बेवकूफ़ी तो कहते हैं, उसको कुछ गलत होता है तो ठंड है तो उसको कंबल में डालते हैं. ये सारी चीज़ें पेरेंट्स करते हैं. वैसे तुम तो अपनी बॉडी के पेरेंट हो. अगर तुम अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखोगे तो बीमारी तो होगी. और ऊपर से ये गधा बोलता है, यू आस्क्ड अ लॉट ऑफ फेयर क्वेश्चंस, यू फकिंग, वेयर डज द ईगो कम फ्रॉम मैन? आफ्टर डूइंग व्हाट यू डिड, ये ईगो तेरे में कहाँ से आई कि तू लोगों के क्वेश्चंस को जज कर रहा है? इसका मतलब ये है, यू आस्क्ड लॉट ऑफ फेयर क्वेश्चंस, कि तुमने क्वेश्चंस पूछे, सही थे वो, पर इस सही थे का मतलब वो ये कह रहा है कि तुमको नहीं पूछने चाहिए थे, कि तुम नहीं पूछ रहे थे. मैं जज कर रहा हूँ कि तुमको नहीं पूछने चाहिए थे, पर जो पूछे वो ठीक थे. ये इसकी एटीट्यूड नज़र आ रहा है. बिल्कुल खोल दिया मैंने डीप. दैट आई वांटेड टू टेक सम टाइम टू आंसर. टेक सम टाइम? यू डिडंट टेक टाइम टू फकिंग स्लैप द फकिंग डूड मैन. उसको थप्पड़ मारने से पहले तूने 2 सेकंड नहीं सोचा कि तू सही कर रहा है, गलत कर रहा है. तूने ये नहीं सोचा कि उसने पहली बात तो इंसल्ट सही की, दूसरी बात उसका इंटेंशन मुंह पे ये नहीं था. वो स्माइलिंग मैन, स्माइलिंग जैसे जोक मार. सब पे जोक लग, सब पे इंसल्ट लग रही थी. एक इंसल्ट तेरी वाइफ पे लग गई, क्या हो गया? इतने तुम ग्रेसफुली वहाँ पे टक्स वक्स पहन के बैठते हो, थोड़ी तो ग्रेसनेस आनी चाहिए कि भाई अरे कोई नहीं, इट्स फाइन, ना सुनिया. अगर तुमको करना, तुम बैंड उल्टा कर देते कि शी इज एंग्री, शी इज सिक, कम ऑन मैन, कम ऑन, ऐसे कर दो बस. टू आस्क सम टाइम टू आंसर, यू डोंट टाइम, आंसर, क्वेश्चंस, फेयर, इन सब वर्ड्स का मतलब इसको नहीं पता. मैं ये बता रहा हूँ. 11 सेकंड पे ये हाल है इस वीडियो का. सोचो आगे क्या क्या होगा. मैं भी लंच करके आऊँ. चलो, भारी दर्द हो गया. मुंह देखो इस चूतिएगा, इस मुंह देखो इसका. ड्रामा शुरू हो चुका है. लाइक ड्रामा, एक्टिंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड मैन. ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ड्रामा. सीरियसनेस, वो बड़े बड़े वर्ड्स, बुलशिट, वो सब करने चालू. मुझे फेस से दिख गया कि अभी बोलेगा, हेलो फ्रेंड्स, past couple of months after what happened have they really took me to a place where I needed to do some thinking, a lot of thinking, and I did a lot of thinking. I did some cleansing about what I did, and if it was wrong or if it was right, I didn't know, but at the time it felt right because I wanted to protect the emotion. The fucking protect इतना word use करता है ना, protect. ये ड्रामा शुरू होगा. और ये सब ड्रामा, this whole fucking drama, I can already see in the fucking first expression of his fucking ugly face, man. That's how I'm gonna put it. Come on, I'm not gonna fucking back up after what he did. Toxic SOB. Why didn't you apologize to Chris in your acceptance speech? Look at the way he's reading the questions. The question, like, see his body language is like, he's like, why didn't you apologize to Chris in your acceptance speech? He's already moving away from the question because उसको पहले से लग रहा है कि question speech. So he would say, why would I apologize in the acceptance speech? Because I think that he did wrong. That's what. मतलब एक इंसान जिस तरीके से the way you read a question tells you how you're gonna answer. So again, didn't you?
बाय द वे मुझे अच्छा ही लगा कि straight dive into the first question, no fucking monologue. Yeah. Why didn't you apologize to Chris in your acceptance speech? I was fogged out by that point. What? It's all fuzzy. I've reached out to Chris, and the message out. What the fuck is this? It's fogged out by that speech. I was fogged out by Fogged out. Fogged out from what? Because of your fucking because you're so happy about the Oscar? बस खुद के बारे में सोचना है, बस खुद की हैप्पीनेस, खुद का सब कुछ, बाकी दुनिया जाए भाड़ में. उस पॉइंट पे उसको इतना जल रही होगी, वो इतना जल रहा होगा बेचारा कि इसने मुझे थप्पड़ मारा और ये जा ऊपर बैठा ऑस्कर ले रहा है, वो भी बेस्ट एक्टर का, जो कि हमको पता है सबसे बड़ा अवार्ड है मूवी इंडस्ट्री का, बेस्ट एक्टर. सबसे बड़े अवार्ड को ये लेके बैठा और मेरे बारे में भूल ही गया. तो तू फॉग्ड आउट हो गया, यू फॉग्ड आउट इन द फकिंग फॉग ऑफ योर ईगो, touching skies, because of the Oscar you won, doing a shitty movie with shitty acting. by that point. It's all fuzzy. I've reached out to Fuzzy, क्या fuzzy? जब इंसान कोई बोलता है इट्स ऑल फजी, मैं भूल रहा हूँ, इसका मतलब याद करना ही नहीं चाहता, उसको सब याद है, बताना ही नहीं चाह रहा, एड्रेस नहीं करना चाह रहा, इसलिए फजी 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 फॉग्ड, ये सारी फेक आंसर, मैंने एम्प्टी आंसर, मैंने पता था ये फिर से बकवास करेगा यार, क्या है. Chris, and the message that came back is that he's not ready to talk, and when he is, he will reach out. So I will say. अब यहाँ पे मुझे क्रिस की गलती लगती है कि वो कह रहा है कि मतलब जब तुम मुंह फुला के बैठ जाते हो, एक पॉइंट पे मैंने भी किया था, तो इसलिए मुझे पता है पर्सनल एक्सपीरियंस से कि नहीं करना चाहिए, फ़ायदा नहीं होता. एड्रेस इट, टेक द रिवेंज, आस्क फॉर कॉम्पनसेशन, जो भी तुमको करना है, बट डू इट. फॉरगिव, रिवेंज, कॉम्पनसेशन, तीनों में से कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, क्योंकि उसी से फिर तुम सिचुएशन से गेट ओवर हो पाओगे. फॉरगिव करना सबसे ऊपर होता है. कॉम्पनसेशन और रिवेंज मुझे थोड़े लोअर ग्रेड के एक्शन लगते हैं, क्योंकि क्रिस भी तो उस प्रेजेंट मोमेंट पे प्रेजेंट था, वो अपने आप को बचा सकता था, पर वो नहीं बचा पाया. ही ऑल्सो एक्टेड लाइक अ स्केयर्ड मैन, डरे हुए इंसान की तरह. तो इसलिए मुंह फुलाना मुझे लगता कि सही था. उसको बोलना चाहिए था कि हाँ बात कर, ऑन लाइव टीवी बात कर, फिर उसको पूरे टीवी के सामने नंगा करता, तब टीवी तो खुश होता. विल स्मिथ, ईगो देखो इस बंदे की, लाइक द ईगो, कि एक अपॉलॉजी वीडियो है, वाइट पहना हुआ, चलो ठीक है, वाइट इज कलर ऑफ पीस, ऑनेस्टी, मेक सेंस. यहाँ पे डब्ल्यू छापने की क्या ज़रूरत है कि मैं विल स्मिथ हूँ, मेरे कपड़े देखो, मर्चेंडाइज्ड, फक. अपॉलॉजी is an action of humbling down, जहाँ पे तुम अपनी ईगो कम से कम दिखाते हो, तुम तुम झुकते हो अपॉलॉजी में, तुम कहते हो कि भाई मुझसे गलत हो गया, मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने उस सेकंड सोचा कि मैं बहुत कुछ हूँ, और मैं झुकता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, और जितना मैं अपने आप को सोच रहा था मैं उतना नहीं हूँ. ये होती है अपॉलॉजी. हाँ, ईगो को हटाने की, पर ये ईगो को और छाप के आया अपने माथे के ऊपर कि मैं ईगो छाप रहा हूँ, जस्ट ऑपोजिट. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फेक अपॉलॉजी है, फेक बिहेवियर है, ये अभी भी वैसा का वैसा egotistical. He's got fucking face and head like a testicle. So his egotistical
shit is still on. Just like this is all a fakeness. Say to you, Chris, I apologize to you. Man. You really did it wrong. You really did it wrong, man. You just fucking... You did it wrong, man. You did it wrong. You did it wrong, man. You did it really wrong. In your words, you just showed. इसने अभी दिखाया कि ये apologetic नहीं है. देखो कितनी ego. Apology to you, Chris. Apology to you, Chris. First of all, apology is like this. Apologize. I apologize. What is this? Tan. What is this fucking shots? Tan. क्या है ये? I'm breaking down the body language and the mentality of the guy, man. Like simply in simple shots. I'm so quick and intelligent. Is that see? He's not ready to talk, and when he is, he will reach out. Oh, there you go. Now see, just before saying, see, this video is so fucking detailed. I'm loving it. देखो, जब तुम जिंदगी में कोई एक्शन करते हो, it's like जब तुम खाना खाते हो, तो तुमको like how should I put it? जब तुमको कोई काम करना है, तो तुम straight उस काम में dive in करते हो, करते नहीं करते? तुम बीच में टाइम वेस्ट नहीं करते. खाना सामने रखा है, तो तुम ये नहीं करते पहले. चलो आप खाते हैं. जब तुमको नहीं खाना और तुम्हारे सामने रख दिया, तब ये एक्शंस आते हैं कि खाना तो नहीं है, क्या करूं. He doesn't want to apologize. He's still resisting from inside to apologize. He doesn't want to apologize. He cannot apologize. ये बस apology अपने career और अपनी social image को बचाने के लिए apologize कर रहा है. इसीलिए ये itching. अगर मुझे apology करनी है, I wouldn't even care about what's fucking happening to my body. I'll say, Chris, apologize. Chris, I really apologize, man. It was fucking rude. It was fucking rude. It was rude and wrong and everything. He's like, so I want to say, how should I put it? I don't want to apologize. मुझे apology नहीं करनी है. मैं क्या करूँ? I don't want to apologize. What else should I say so that it feels the least apologetic to me, not to them? It's just it's a proof I'm apologizing, but I don't want to feel apologetic. Come on, what should I do? This is you figuring out to say apology in the least apologetic way. You don't figure out कर रहे अभी. So man, please man, what is this? This is not apology. This is real apology. See. So I will say to you. So I will say to you. Twice, दो बार बोला. Repeating sentences. It means you don't want to say it. You तू बोलना ही नहीं चाह रहा, इसलिए I will say, don't want sorry, I'm sorry, yeah, sorry. So I will say to you, Chris. इन सब की क्या ज़रूरत है भाई? अपॉलॉजी सिंसियर निकलने के लिए तैयार बैठी होनी चाहिए. इफ़ यू आर अपॉलजेटिक, से विल स्मिथ, I'm with you in only one scenario. I'm with you in only one scenario. And that is, if you don't want to apologize, don't do it. I'll back you. I'll say, man doesn't want to apologize. He doesn't feel, so he doesn't want to apologize. He's wrong in doing that, yes, but to him it feels right. So you are free to do what you need to do, what you want to do. Not like, don't sell your soul, doesn't matter how bad it is, for air conditioning, for movies, for cars. Don't sell your soul to the society. We already hate you. It's not going to change. Nothing's going to change. Apology doesn't matter. Even in that, you're doing a bad job. Behavior ढंग से नहीं है, अपॉलॉजी ढंग से नहीं है, तो तू करेगा क्या ढंग से? तो हमको ऑलरेडी पता है कि तू एक नीच इंसान है. तू है एक नीच इंसान. तो
एटलीस्ट उसको ट्रू तो रख. मैं कल को ये तो कह सकता हूँ कि ही इज़ अ ट्रूली evil man. I pay respect. Polarized. They are duality in life. Positive, negative. Choose one. You're humping in the middle, man. Like a bitch. There's no need. So this I apologize to you. You don't want to apologize. It's clearly visible. You don't want to apologize. So don't! I apologize to you. इसमें भी एक चैरिटी कर रहा है कि क्लिक कर दी. लाइक किसी बच्चे को टॉफ़ी देते ना, ले बेटा लॉलीपॉप खा लो, अब आप खुश हो, जाओ खेलो, ऐसे कर रहे हो. देखो देखो. I apologize. Apologize. You can even you might as well smile, man. I can almost see the smile. Like hit the man and sorry. Are you happy? Are you happy? Patronizing. Taunting. That's what this is. To you. My behavior was Apt. unacceptable, and I'm here whenever you're ready to talk. एक सेकंड कुछ सही नहीं है भाई. मुझे समझ नहीं आ रहा. मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रहा. कुछ तो क्या हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? डॉक्टर पेशेंट को बोलेगा कि तू मुझे देखने आ, या पेशेंट डॉक्टर को बोलेगा तू मेरे को देखने आ. क्या होता बताओ? डॉक्टर को बोलता है कि तू डर रहा है, सुई से डर रहा है, पर जब तू रेडी हो मेरे पास आ जाओ, मैं लगा दूंगा. यही तो होता है. यहाँ पे गाइस देखो, विक्टिम दिक्कत ये हो रही है कि विक्टिम यहाँ पे प्ले कर रहा है क्रिस रॉक, जबकि विक्टिम है कौन? विक्टिम विल स्मिथ है. जिस इंसान के दिमाग में बीमारी है वो विक्टिम है, या वो बीमारी जिसके ऊपर फूट रही है वो विक्टिम है. वो तो ठीक था बिल्कुल बंदा, वो भी ठीक है, उसने वो तो बिल्कुल ठीक है. उसकी बीमारी बिल्कुल ही अलग है. यहाँ पे उस बीमारी की बात ही नहीं हो रही. उसकी बीमारी ये है वो स्टैंड अप नहीं कर पाया. पर वो बट which is ironic because he's a stand-up comedian and he could not stand up for his pride, which means he's not a stand-up comedian because he can't fucking stand up. He's got no spine. Chris Rock, you're not a rock. You're not hard as a rock. Hard as a rock. Chris Rock, you are weak. You are marshmallow. You're not a rock. Okay. तो यहाँ पे बोलता है कि I'm ready to talk to you. Wait a minute man. इससे सारी ये वाइब आ रही है कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं बेटर हूँ, तू मेरे से बात करने आ जी. जिसमें गलती उसकी है क्योंकि वो वीक एक्ट कर रहा है. पर ये तो जले पे नमक छिड़कना हो गया ना. इसको बोलना चाहिए कि ऐसे बोलेगा कैसे कि फिर सुनो एक बार. My behavior was unacceptable. Yeah, when he says behavior, it's almost angst on his face, like my behavior was right. Like ये बोलना चाह रहे हैं right, but ये बोलता unacceptable. See, my behavior was like he's still angry. My behavior, like he sees that image again. How dare you said that joke, man? My behavior, like so. That's what I feel right now, man. Unacceptable, and I'm here whenever. I'm here. What does mean I'm here? You weren't there, man. You left your buddy in the open. You weren't there.
Why weren't you there at the Oscars, man? Why weren't you there in the Oscar accepting speech, man? Why weren't you there just after you hit him, man? Why weren't you there after you insulted him in front of the whole world, man? Why weren't you there? Forget, he's not gonna come back to you ever again. Ever again. I'm telling you. He's not gonna talk to you ever again in the whole fucking goddamn eternity. I'm telling you. So now all of a sudden you're acting like Jesus. I'm here to save you. Don't act like that. What is that? Black Jesus? See, you just put the name of your own race in dirt. तुमने अपनी रेस का, अपनी जात का नाम खराब किया, बिल्कुल खराब किया. ऑलरेडी ब्लैक रेस के बारे में 1 करोड़ assumptions है दुनिया में, और जितनी ज़्यादा अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जितनी ज़्यादा अनपढ़ कंट्री हैं, वो और ज़्यादा दिमाग में assumptions लेके बैठते हैं about black people. And you're adding it, man. You're just adding it to the fear factor. So yeah, I was like, I'm here for you. Time has passed, man. Time is gone. Moment जा चुका है. Now your presence does not matter. It does not matter at all. So his vocabulary, his choice of words, and the body language, the sense of talking, it's all wrong. It means he doesn't mean apology. ये apology करने आया ही नहीं है. मुझे तो अभी भी थप्पड़ लगते दिख रहे हैं क्रिस रॉक के ऊपर. अभी भी मुझे लग रहा है दूसरा तीसरा चौथा थप्पड़ मार रहा है जब ये ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा है. Do you get it? I can see the words. I can see the slaps in the words, in the body language. I'm here. What the fuck? He should say, I'm in my senses. I'm here to get healed. You are my savior, Chris, because you did not hit me back. You showed forgiveness, Chris. You didn't hit me back. You not saying bad shit about me is you forgiven me. And I don't believe that there are human beings that exist as good as you. If he only spoke like me, this would matter. These are the words that must be spoken by him. And he's like, I'm here. Come talk to me. I'm ready to talk to you. Fuck. You are the diseased man. You are the fucking retard. You need to go to the hospital. He doesn't need to come to you. You waiting for him? You are waiting for him. He's not waiting for you. Did you get it? So yeah. बकवास चल रही है और कोई बकवास हो रही है यहाँ पे और कुछ नहीं. Where you're ready to talk. I want to apologize to Chris's mother. I saw an interview that Chris's mother did, and that was one of the things about that moment. I just didn't realize, and I wasn't thinking, but how many people got hurt in that moment. So I want to apologize to Chris's mother. I want to apologize to Chris's family, specifically Tony Rock. We had a great relationship. Tony Rock was my man, and this is probably irreparable. I spent the last 3 months replaying and understanding the nuances and
and the complexities of what happened in that moment. And I'm not. हेलो हेलो हाँ आज छुट्टी है। बताऊंगा अभी तुम्हें एक वीडियो, विल स्मिथ का अपॉलजी वीडियो है, पता है? हाँ उसका अपॉलजी वीडियो है 5 दिन पहले। बकवास कर रहा है, बकवास। ओ आई एम सॉरी टू, कि फैमिली को सॉरी, उनको हर्ट हुआ होगा। मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि कितने सारे लोग हर्ट हो जाएंगे इस पे। हद होगी, इसने रियलाइज़ नहीं किया है। मतलब उस सेकंड में थप्पड़ मारते वक्त ऑफकोर्स कोई नहीं सोचता कि कितने हर्ट होंगे, पर पता तो सबको होता है कि एक के हिट होगा तो उसके सारे रिलेटिव्स और कंसर्न वाले हिट होंगे। हद होगी। अरे बीवी का डिवोर्स करा दिया इसने, अब उसकी बीवी का उसको रिस्पेक्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। क्रिस रॉक की बीवी क्या उसके पास बचेगी अब, ये बता तू? हाँ, बीवियाँ थोड़ी देखती हैं कि गलत कर हुआ सही हुआ उसके साथ। बीवियाँ देखती हैं कि किसकी लगी, किसकी फटी। तो बस उसका डिवोर्स कर। तो ये वही है ना कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे तो अभी भी इसकी बॉडी लैंग्वेज में ये लग रहा है कि ये अपॉलजी, अरे मैंने इफेक्ट तो शुरू हो गया होगा। अब वो उसकी बीवी भी तो थोड़ी सोशल इमेज पे अभी चिंता कर रही होगी, अभी नहीं छोड़ूंगी, कुछ टाइम बाद छोड़ देगी जब शांत हो जाएगी। मैं कि ये क्या बोल रहा था मैं कि भूल गया। हाँ, और तो हाँ रीजॉइन कर लिया मैंने, वो बताऊंगा तेरे थोड़ी देर में। एक बार ये वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ थोड़ा सा। अच्छा तू चंडीगढ़ में है क्या? कुछ नया हुआ है? ये कब हुआ? अंबाला भी अच्छा है तो भाई, पटोले तो अंबाला में भी होंगे नहीं? चल चंडीगढ़ तो नहीं। अच्छा हाँ, साइकी और जैसे जो लठपना है ना, हाँ अनपढ़ हाँ 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 हाँ। तो अप्लाई कर देना, एक काम कर, नहीं अप्लाई कर देना, अप्लाई कर दे वापस जाने के लिए। वैसे तो नहीं करना चाहिए अप्लाई, क्योंकि जो आया उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, वो भी एक ट्रेनिंग है दिमाग की। बाकी दिमाग की ट्रेनिंग के बारे में तो अभी चल रहा है। इतनी बकवास कर रहा है ये, इतने मतलब इसकी है ही नहीं बॉडी लैंग्वेज में अपॉलॉजी। सारे वर्ड्स गलत चूज़ कर रखे हैं इसने, और ये बस बकवास करने आ रहा है। मैं इसको एक बार ख़त्म करके करता हूँ तो ठीक है। देखा हो तुम चैनल पे अपलोडिंग शुरू कर दिया मैंने, काफ़ी अपलोड आ रहे हैं। काट दी। Anyway. I'm not going to try to unpack all of that right now, but I can say to all of you, there is no part of me that thinks that was the right way to behave in that moment. There's no part of me that thinks that's the optimal way to. Don't say that again. See, the thing is, he's apologizing. तुमको लग रहा है apologize कर रहे हैं, ठीक है, पर अगर तुम उसकी ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज और न्यूएंसेस देख रहे हैं, तो अगर मैं इसकी अभी की स्पीच अगर अभी की स्पीच के न्यूएंसेस देखूं मैं, तो इसकी स्पीच में बिल्कुल भी कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा अपॉलजी कह रहा कि दैट वाज नॉट द ऑप्टिमल वे। तो यू मीन इट वाज नॉट द बेस्ट वे बट इट वाज अ वे। तो इसका मतलब अभी भी ये लग रहा है कि जो क्रिस रॉक ने किया वो गलत था। दैट्स व्हाट इट मीन्स, कि जो मैंने थप्पड़ मारा वो बेस्ट वे नहीं थी, कुछ और करना चाहिए था। अगर ये ऐसा सोचता है तो उस वीडियो में आगे ये भी एड्रेस करना चाहिए कि भाई उसने भी गलत किया। अगर वो नहीं बोलेगा तो फिर
फिर तुम कुछ कर नहीं रहे ना, लाइक यू आर नॉट टेकिंग द सिचुएशन टू द नेक्स्ट लेवल। रिलेशनशिप में क्या होता है, जब रिलेशनशिप एक जगह पे लटकने लग जाती है, नेक्स्ट लेवल ना अच्छा हो रहा है ना बुरा हो रहा है, तो लड़की बोर हो जाती है, ब्रेकअप कर देती है। वही नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ ना। क्या तो ये बोल कि वो गलत था, अब आगे केस को आगे बढ़ाओ, या फिर बोले कि मैं गलत था, मैं बिल्कुल गलत था, उसने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। अगर उसने गलत किया तो उसको ठीक करो। सोसाइटी की बेटरमेंट यही तो होगी ना कि दोनों में से एक गलत है। क्या दोनों गलत है? दोनों में से एक गलत है। अगर उसका जोक गलत था, उसकी इंसल्ट गलत थी, तो अब से बैन करो, क्रिस रॉक को बैन करो। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बैन करो, दैट्स इट। मेरे बिहेवियर को बैन करो। और तुम्हें बैन नहीं करेंगे, बिहेवियर को बैन कर देंगे। और अपॉलॉजी, नो पार्ट ऑफ मी इज सेइंग कि fucking dryness. Yeah, so apology की मेरी बॉडी का एक भी सेल नहीं मान रहा है, तो आई अपोलोजाइज। तो मैं कह रहा हूँ कि तो एक्शंस तो नज़र आनी चाहिए ना यार। व्हाट आर द एक्शंस आफ्टर द फकिंग दैट हैवक दैट यू डिड? मैं बताता हूँ। एक पब्लिक अपॉलॉजी, तुमने मूवीज़ देखी होंगी, रोम कॉम मूवीज़ में से होता है कि लड़का, या फिर लाइफ चेंजिंग मूवीज़ में से होता है कि लड़का कुछ अलग करता है, कि बिल बोर्ड लगा दिया, आई एम सॉरी रॉक, go to the TV, I'm sorry rock, if you don't speak to me I'll keep on apologizing till you speak to me. मैं मूवी कर रहा हूँ, स्पेशल एक मूवी कर रहा हूँ जिसमें एक बंदा एक इंसान को थप्पड़ मारता है और फिर उसका वो उसमें चेंज आता है और वो एक लास्ट में अपॉलॉजी करके उस बंदे का दिल जीतता है। एक मूवी बना दे, शॉर्ट मूवी बना दे, फुल मूवी की ज़रूरत नहीं है। 3 महीनों में कितना कुछ हो सकता था, पर ये 3 महीनों में ये नहीं, ये ना कॉम्प्लेक्सिटीज़, नुआंसेस, सिर्फ बकवास है। ये सिर्फ एक तरीका ढूंढ रहा था जिसमें ये खुद को भी ये बोल सके कि भाई मैंने ये अपनी जान बचाने के लिए किया हुआ है, व्हाट द फक, या जान बचाने के लिए किया हुआ है कि मेरा करियर बच जाए, और ख़ुद भी इसको एक ये ना हो कि हाँ मैंने इतना ही अपॉलजाइज किया, कुछ खास नहीं किया। मतलब ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड अ पतली गली, ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड सम वे, लाइक ही वांट्स टू फिनेस द सिचुएशन, द फिनेसिंग। एंड व्हेन यू वांट टू फिनेस द सिचुएशन, इट मीन्स यू डोंट हैव एनी फकिंग intention to rectify the situation. And rectification doesn't involve finessing. Rectification means facing it head to head, straight fucking hit the wall, straight into the wall, and not caring about what's going to happen to me. When you hit Rock, you didn't care about what's going to happen to him afterwards. That slap could have hit him hard, could have broken his jaw, could have poked his eye. Those are little damages. It fucking broke his whole reputation, man. His wife wouldn't respect him. His kids would get bullied in school that your father got hit. Can you fucking imagine that? His kids would literally get bullied in school because kids don't care. Kids are true at heart. I'm not fucking insulting kids. Kids are true at heart. They fucking say the situation to your face that's what happened. Your dad pussied out in front of Will Smith. That's how his kid's gonna get bullied at school for the rest of their life, college, and everywhere. And play that video with them. See? See? That's gonna happen to the kids. So, why are you caring about your own self when you're apologizing? हिसाब बराबर होना चाहिए भाई। जब तुम परवाह नहीं करते किसी को हर्ट करने से पहले उसके साथ क्या हुआ उसके बाद, तो तुम कैसे परवाह कर सकते हो अपॉलॉजी के लेवल में, इंटेंसिटी में, कि मेरे साथ क्या हो? तुम मर जाओ अपॉलॉजी देते देते, तुमको परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर तुमको सच में अंदर से चेंज ऑफ हार्ट करना है तो, चेंज ऑफ सोल तो सही होती है, चेंज ऑफ हार्ट करना है तो, हार्ट भी सोल ही होता है, चेंज ऑफ सोल करना है तो समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? चेंज ऑफ माइंड करना है तो, अगर तुमको सच में सॉरी बोलना है तो तुम्हारे एक्शन एक वीडियो से ज़्यादा बड़े होते हैं। तुमने कुछ ऐसे किया होता कि लोग कहते ऐसी अपॉलॉजी तो मैंने किसी की नहीं देखी यार जैसे अपॉलॉजी इस बंदे ने की। क्रिस रॉक रो लेता कि भाई जितने तेज़ ने मेरे थप्पड़ नहीं मारा ना, उससे ज़्यादा तेज़ इसने मेरे को प्यार से मारा है। ये हुई ना बात, प्यार का थप्पड़ चाहिए।
अब क्रिस रॉक को, he should feel love from Will. उसकी चैरिटी में डोनेशन देके लोग कुछ भी कहेंगे, मैं कह रहा हूँ इन सब चीज़ों को लोग कुछ भी कहेंगे, पर मैं कह रहा हूँ कि वीडियो तो है ही, एक हेड टू हेड फेस टू फेस पॉलिजी तो है ही, पर मटेरियल थिंग्स से भी उसको एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जा सकता है अपॉलॉजी को. लाइक द अपॉलॉजी इज एज ग्रेट एज द फकिंग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मैन. I can see Statue of Liberty when I see Will Smith's apology. That's what people should say after your apology. Did you get it? Movie बना दे, billboard लगा दे, गाना लिख दे, रैप कर दे. यार रैप नहीं किया तूने. लोग डिस ट्रैक निकालते, तू ब्लिस नहीं, डिस ट्रैक नहीं, तू मिस ट्रैक निकाल की I miss you Chris, I really miss you man, I miss our bonding, I know I fucked it up. तो खुद ये बोल रहा है it's unrepairable. जब तुम किसी को ये बोलते ना कि मेरी वजह से किसी को हर्ट हुआ, तो उनको एक ईगो फील होती है. अच्छा तू मेरे को हर्ट कर सकता है, इट मीन्स तुम मेरे को हर्ट किया है, तो मतलब मैं वीक, तू स्ट्रॉन्ग. और वो भी रॉन्ग वे में, राइट वे में करता तो चलो समझ भी आता है कि मेरी भले के लिए सोचा. रॉन्ग वे में मुझे हर्ट किया, इट मीन्स यू शोइंग योर ईगो, योर पावर, your territory, my territory, I'm the fucking lion here, I'm a stronger lion than you. You're pissing, I pissed all over your territory man, territory man. Did you get it? Battery. So, ये अब तक क्या एनालिसिस है. Nuances, fuck's sake. Handle a feeling of disrespect or insults. What? That's the optimal way to handle a feeling of disrespect or जो मैंने शुरू में कहा था पॉज करने से पहले कि इसको अभी भी लगता है कि जो क्रिस रॉक ने किया वो गलत है. It was not an insult man. It was not disrespect at all. वो एक स्टेज थी जहाँ पे लोग चिल करने आए थे, थोड़ा सा ताने तूने मारने आए थे, पर वहाँ पे कोई ऐसा एजेंडा नहीं था, कोई हेट ग्रुप नहीं चल रहा था कि वी आर हेयर टू फकिंग हेट ऑन विल स्मिथ, आज हम सिर्फ विल स्मिथ के इंसल्ट करेंगे, उसकी फैमिली. ऐसा नहीं था वहाँ पे. You were not the only one who was getting insulted, which is not even an insult at such a place. At such place, insult becomes the fake word joke. Or not a fake word, but a word called joke. It becomes a joke. It's not insult anymore. And you're also allowed to banter it out if you feel bad. So if you think it was disrespect, then you should not apologize to anybody who disrespects you. That's what you're not getting. If you think it's disrespect, what you did was right, man. Then it doesn't matter, because his disrespect was just as slap to you as yours was to him. Slap doesn't have to be a physical slap. All these people saying to you in your fucking team or surrounding or ecosystem that say physical harm is the baddest thing, physical abuse, you shouldn't get physical, that's the worst thing they are saying. They are scared of getting physical. That's why they're saying it's physically bad, it's the bad way. You should only care about if it was right or wrong. If it was right, kudos to you, you did the best punishment to him anyone can give. Physical punishment is the best punishment, man. It damages both body and mind. But the point is, what he did was not wrong, because if, as human beings, if we cannot handle banter, we cannot handle jokes, we cannot handle fun, why are we living then? Let's just kill each other at this moment because somebody just said a little bad to me.
The intensity, the amount, the quantity, the quality does not matter if it's wrong. The point is, if it was right of him to make that joke or not. And to us, yes, it was totally fine because it was just a fucking taunt. And if you felt hurt that you felt hurt because of your weakness, because you were weak, and that's why you felt hurt. And being weak is not a quality, it's a bad thing. So because of your weakness, you hit him. And if you think that is right, why are you apologizing? Mat kar apology. Or insults. Insults. After Jada rolled her eyes, did she tell you to do No, something? she did not. She did not. सब कह रहे हैं उसकी रोलिंग ऑफ आइज ये थी कि उसके यहाँ से जोक आया, बाउंस किया, चला गया. वो नहीं है इसकी जितनी बिच. इस रिलेशनशिप में बिच जेड़ा नहीं है, विल है. Will is the bitch. Bitch is not a gender. Bitch is a word given to someone who yanks all the time. Whinging and whining. रोना धोना, मेरा ये नहीं किया, अरे मैं मर गया, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, इसने मेरे को ये कर दिया, उसने मेरे को ये. इसको बिचिंग कहते हैं. तो वो तो झेल गई थी उसका. आई जो doesn't matter to me. I don't care. उसने जो जोक लिया था, इसको इनसिक्योर. देखो, जब तुम किसी को तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी रियलिटी चलती है, तुमको लगता है जो दूसरे वाले के साथ होता है, क्योंकि तुमको लगता है दूसरा तुमको कह रहा है, वो तुम चाहते हो कि वो तुमको कहे, या फिर तुम खुद उसका एक्सप्रेशन का मीनिंग अपने दिमाग में बनाते हो डिपेंडिंग ऑन तुम्हारी उसके साथ रिलेशनशिप कैसे चल रही है. सबको पता है इसकी उसके साथ रिलेशनशिप कैसे चल रही है. ये भीख मांग रहा है उसको कि वापस आ जा, जबकि उसने उसको चीट किया. इनका ब्रेकअप तो होना ही है. अब इसको करप्शन कहते हैं. इनको अलग हो जाना चाहिए था. सब पूरी दुनिया को पता है विल स्मिथ को उसको डिवोर्स दे देना चाहिए था क्योंकि उसने चीट किया. अब वहाँ पे ये वीक पड़ गया. उस वीकनेस की वजह से ये इनसिक्योरिटी में डरा जीता है कि वो मेरे को फिर से ना छोड़ दे. और उस डर के चक्कर में उसने जोक मारा. इसने परवाह भी नहीं की, और इस डर में इसने सोच लिया मेरे को फिर से छोड़ देगी, इससे अच्छा उसको जाके मार आता हूँ, इसको शो करता हूँ कि मैं फकिंग किंग हूँ. तो एक तुमने अपनी वीकनेस और एक ट्रुथ और एक रियलिटी पास्ट में नहीं मानी, उसकी वजह से तुमने पूरा का पूरा अपना फ्यूचर बर्बाद कर दिया. और होता जाएगा. अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं रुक रहा. आगे भी ऐसी चीज़ें होंगी. जेड़ा की वजह से ये इनसिक्योर और फियर की वजह से ये कुछ ऐसी चीज़ें करेगा जिससे दूसरे हर्ट होंगे, जस्ट बिकॉज ही डजंट केयर अबाउट एनीबॉडी एल्स, बिकॉज उसको खुद हर्ट नहीं होना, पर वो उसको होना ही है. वो छोड़ेगी इसको, 100% छोड़ेगी. वो तो इस बात से खुश है कि ओ मेरे को किसने इंसल्ट मारी, इसने बदला लिया, ओ मैं ठीक हूँ. गलत तो किया उसने गलत किया, उसने मेरे को ऐसे जोक क्यों मारा. वो सिर्फ इस लेवल पे रही है. वो ये नहीं देख रही कि गलत हुआ वो हुआ. वो तो उस वाले स्टैंडर्ड पे. समझ रहे हो तुम? समझोगे ना? एग्जैक्टली. तो उसने इसका 100% ये आंसर है कि वो उसने उसको रोलाइज करके कुछ नहीं बोला. मैंने देखा नहीं किया उसने. No. It's like, I made a choice on my own, from my own experiences, from my history. Insecurity, fear, history with Jada, how I got fucked by a new dude who fucked my wife for 4 years, and I didn't have the guts to say to my wife, yes, I don't deserve you, you deserve better, that's why you went to someone, and I'm gonna work on myself, and maybe in future we might get along if God permits, if existence permits, if time permits, if opportunity permits. But till then I'm gonna work with myself and be with someone else. Until then we can be friends,
and you can help me grow. That is it. With Chris, Jada. He's laughing, man. He's even यहाँ पे हंस रहा है, तो ये और क्रिस के ऊपर हंस रहा है कि इस पूरी वीडियो में हंसना तो बनता ही नहीं है, और अगर हंसना बनता है तो उसको हंसना अर्न करना पड़ेगा एक बहुत ज़्यादा सिंसियर अपॉलॉजी के साथ, जो कि अगर वो होती शुरू में तो मुझे इसके साथ मैं भी हंसता, मुझे ऐसा फील नहीं होता कि क्यों हंस रहा है। मुझे शुरू की अपॉलॉजी इतनी बकवास लग रही है तो ऑफकोर्स मैं भी अभी यूँ बोलूँगा कि क्यों हंस रहा भाई। लाइक अगर जैसे मैंने बोला कि वो सारे वर्ड्स बोलता अपॉलॉजी में कि मैन यू आर द गॉड टू मी क्रिस, you forgave me for the things I shouldn't be forgiven. I should be in jail, but I'm a fucking dude, so I'm a big actor, so I'm not in jail. He should be in jail. If he's not in jail, then release all the other black people, man, who are in jail. Who are in jail just because of assumptions that they can be criminal. Because of racism, all the black people who are in jail should be released just because Will Smith is outside. Because he just proved to that image that he's a fucking hooligan. Black people are hooligan. That's the assumption. Then अगर तुम जेल में जाओगे, if you go to jail, American jail or anywhere in the jail where black people are, you know, put under assumptions, you know, who are unfairly treated by the law, वो सब गुस्सा होंगे, वो बहुत ही गुस्से में होंगे, वो एंग्री होंगे एक नंबर के कि भाई अगर इतना ही है तो हमको भी छोड़ो, हमने भी तो वही किया है जो उसने किया है, और हमको तो डर के मारे डाल दिया, फिर इतना ही हमने किया था और हमको मार दिया कि अरे मर्डर ना कर दे. Why is Will Smith not doing time? He should. 3 महीने घर पे बैठा नुएंसेस और कॉम्प्लेक्सिटीज़ को चेक करने, ये 3 महीने उसको जेल में होना चाहिए था. जेल में जब भी नुएंसेस और कॉम्प्लेक्सिटी आती ना, उसको 3 महीने लगते नहीं, 1 हफ्ते में बोलता है छोड़ दो. बस एसी में बैठा है, चिकन खा रहा है, रेडियो सुन रहा है, मूवी देख रहा है, गाने सुन रहा है. ऑफ कोर्स 3 महीने लगेंगे MCBC को. I had nothing to do with it. I'm sorry, babe. I'm going to say sorry to my kids and my family for the heat. I'm sorry, babe. She's not a babe. I'm sorry, babe. I'm sorry, babe. What a fucking empty, untruthful lie is that? I'm sorry, babe. She's not a babe. She's that dude's babe. Fucked her for 4 years. Babe? She's not a babe. Let's just put it at that. Not just get into too aggressively into that point, but let's just put it that she's not a babe. वो तेरी babe नहीं है, वो तेरी girlfriend नहीं है. वो पता नहीं दे साथ फिर से सिक्योरिटी केस में आ गई है कि जो उसको एक कुछ टाइम के लिए वाइल्ड एंजॉयमेंट करनी थी वो कर चुकी है. देखो भाई, हर एक की अपनी जर्नी होती है, सोल की जर्नी, हर की कॉन्शियस की जर्नी. तो वो तो अपनी जर्नी करके आ रही है, वो तो कर चुकी कि एक बार वाइल्ड करना था, हो गया. अब उसको वापस स्टिलनेस चाहिए, वो तेरे साथ वापस आ गया. पर मैं कह रहा हूँ ये चिलनेस और स्टिलनेस ज़्यादा नहीं चलेगी. कुछ टाइम बाद फिर से वाइल्डनेस चाहिएगी लाइफ में. क्या पता है इसको, वो 2 तरीके से आती है. क्या तो तुमको ज़रूरत पड़े या फिर लाइफ तुमको तुम्हारी तरफ फेंक दे. जहाँ तक उसकी मुझे कॉन्शियसनेस दिख रही है, शी अप्रिशिएट्स लाइफ. शी इज़ नॉट स्केयर ऑफ एनीथिंग. वो जब चैलेंज आता है पकड़ के कूद जाती है. एंड शी डजंट केयर अबाउट इट. शी डजंट केयर अबाउट एनीवन. शी डजंट केयर अबाउट यू, व्हिच आई लाइक. कि वो अपनी नीड्स और अपने ट्रुथ के साथ ऑनेस्ट है, अपनी रियलिटी के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट है, और जो उसको करना होता है वो करती है. तो क्या पता उसको नहीं चाहिए वाइल्डनेस लाइफ में, लेकिन एग्जिस्टेंस और
लाइफ में कोई ऐसा मूड आ जाए जहाँ पे वाइल्डनेस लाइफ उसके ऊपर फेंक दे, क्या पता मैं मिल जाऊँ उसको, मैं इम्प्रेस कर दूँ, कोई और मिल जाए, क्या पता वो इम्प्रेस नहीं होना चाहती हो, लेकिन जैसे मैं बोला कोई ऐसा सिचुएशन बन जाए जहाँ पे उसको लगे करना पड़ेगा, जैसे वो कह रही हेल्प करने गई थी उसको, क्या पता उसको एक और बंदा देखो, एग्जैक्टली शी वांटेड टू हेल्प दैट गाय, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट गाय। तो वो प्रैक्टिस उसने एक बार की है। जब तुम एक गेम को एक बार खेलते हो तो तुम उसको फिर से खेलना चाहते हो, क्योंकि वो भी अनसेटिस्फाइड हो गया, वो गेम मैंने खेला तो था पर उसमें ये मैं और कर सकती थी, तो क्या पता एक और इंसान आए जिसको हेल्प की ज़रूरत हो, उसको उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को मैच्योर समझती हो, वो फिर चली जाएगी किसी के पास। इन शॉर्ट वो तेरी बेब नहीं है, शी इज़ नॉट हैप्पी विद यू, शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद यू, शी डजंट थिंक यू आर मैच्योर इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ, मैच्योर इनफ, यू आर किड, तू उसके लिए एक बच्चा है, इंटेलिजेंट इनफ, शी डज नॉट रिस्पेक्ट यू, शी इज़ नॉट योर बेब। And say sorry to my kids and Kids, my family. किड्स से भी मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ, किड्स भी यहाँ पे अटैचमेंट दिखाए कि हमारे बाप ने, कि हमारा बाप है, हमारा बाप हमको पैसे देता, खिलाता है पिलाता है, वो ऐसा है, लेकिन क्योंकि अगर मैं उनका बच्चा होता, मैं अपने, अगर मैं इसका बच्चा होता तो मैं इसको कहता कि ऑफ इनफ, क्योंकि उनके बच्चों के अपने करियर है ना, अभी अब इतना इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। अगर करियर नहीं है तो तुम चिपट सकते थोड़ा, क्या रहे अभी है, पर तो उनके करियर हैं, बड़े हो चुके हैं वो, उनको बोल देना चाहिए भाई बाप देखो वी लव यू, पर अगर आप अच्छे से अपॉलॉजी नहीं मांगोगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आप अच्छे से अपॉलॉजी मांगो, आप अच्छे से अपॉलॉजी मांगो, हम क्रिस के साथ रहेंगे जब तक तुम अच्छे से अपॉलॉजी नहीं मांगते, ये बोलना चाहिए कि आई विल गो टू क्रिस रॉक्स हाउस टिल यू डोंट अपॉलजाइज टू हिम प्रॉपर्ली। For the heat that I brought on all of us. To all my... These are all arrogant sentences कि the heat that I brought on, इसमें फिर से दिखा रहा है कि देखो मैंने कुछ किया, और ये यहाँ पे apology के तरीके से बोल रहा है, लेकिन to Chris Rock or to some other guy it looks only arrogant कि the heat that I brought on, because of me it's happening, I'm the reason of this fucking hurricane. These are all because it's not easy to create a hurricane. These events not happen to everybody in everyday life. He did it. It means he's proud of it, that I made some disturbance, I made a fucking ripple in the fucking fabric of the society. So he should say कि because of me, because of my bad deeds, ये बोलना चाहिए, ये मत बोलो कि I brought a lot of heat. Heat can be positive and negative. Don't use general words. Say, use proper adjectives like I brought bad heat, bad light, shame to my family. ऐसे बोलना चाहिए, पर ये वर्ड यूज़ नहीं कर रहा अब तक। shame, bad reputation, ये सब यूज़ नहीं, क्योंकि वो करेगा तो इसको गंदा फील होगा कि मैं रीज़न हूँ अपनी फैमिली का नाम डुबाने के लिए। मैं तो अपॉलॉजी दे रहा हूँ ताकि सबको ये लगे कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ और मेरी फैमिली की और अच्छी मेरी स्मिथ्स तो भाई गलती करके पछताते भी हैं। ओह यस 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 यस, यही रीज़न है। अनलॉक्ड इसका इंटेंशन ये है लोगों को ये दिखाना कि देखो मैं वाइट कपड़े पहन के आया हूँ और मैं अपॉलॉजी भी कर सकता हूँ, मेरे में ईगो नहीं है। पर अगर ये बैड वर्ड्स यूज़ करता है, एडजेक्टिव्स की ब्रॉड शेम, वो होती है एक लेजिट हम्बलनेस, पर इसको हम्बलनेस नहीं दिखानी, इसको ईगो दिखानी है और ज़्यादा। ही इज़ ऑल अबाउट ईगो मैन, कम ऑन। My fellow nominees, you know, this is a community. It's like I won because you voted for me, and it really breaks my heart to have stolen and tarnished. Okay. Let's go. Your moment. What moment? I can still see Questlove's. I can still see Questlove's eyes. You know, it happened on Questlove's award, and Okay. you know, it's like I'm sorry really isn't sufficient.
Of course, of course. Questlove's eyes saying, well, well, well. You're putting us back into the same pit. You're putting us back into the same pit. Well, our race, it's gonna get defamed again. White people are just gonna use this as an excuse to insult us again. Black people. Events in history at the Oscars, violent events done by black people. They're gonna use it. The racist people I'm talking about, not all white people. With white or black, when I say white, I mean racist, or with some, when I say black, of course black people can be racist as well, who are too protective about their own race. Like, too much protection is again an ego. Racism is all about ego. White thinks he is something, black thinks he's something, yellow thinks he's something, brown thinks he's something. That's ego. Anyway, तो yeah, Questlove is a drummer. मेरे हिंदी भाइयों के लिए बताता हूँ मैं. Questlove एक ड्रमर है. तुमने अगर टुनाइट शो देखा होगा, जिमी फैलन का, उसमें जो एक बैंड होता है, ऑल ब्लैक पीपल का एक बैंड है, उसमें ड्रमर जो है, जो सर पे सींग लगा रखा है, वो Questlove है. तो आई वॉच इट. या आई यूज्ड टू वॉच इट, सो आई नो. अब मैं सिर्फ इंडियन देखता हूँ, सो डोंट गेट एंग्री ऑन मी कि मैं सिर्फ वेस्टर्न कल्चर देखता हूँ. आई वॉच इंडियन टू. इंडियन कंटेंट है मेरा, उस पर देखना. तो इंडिया अभी एस्ट्रोलॉजी का भी कंटेंट डाला है, लास्ट वीडियो. अभी एक और डालूंगा इंडियन यूट्यूबर के ऊपर. सो इंडिया नंबर 1, देन अदर. यस. तो ये Questlove है. तो Questlove नहीं सोचा होगा कि यार गधे, ओ गधे, ओ गधे, ओ बहन के, ओ गधे, बहन के गधे, रुक जा भाई, बहन के गधे रुक जा, क्यों कर रहा है, क्यों किया तूने ये भाई. सब फिर से डुबो दिया सब कुछ अपने लिए भी और हम सब के लिए. What would you say to the people who looked up to you before the slap? Nice question. Or people who expressed that you let them down? I built you up, but you let me down. I built you up first to let me down. Found the flames of your places. You were there at the turn, waiting to let me know that you are a shit. You are a shit person. You are shit. You are such a shit. Will Smith, you stink. So there's two things. One, disappointing people is my central trauma. I hate when... Again. फिर से बड़ी बड़ी बातें, फिर से वही बकवास, इधर उधर के वर्ड ले आता हूँ. जब इसका एक्सप्रेशन भी आता ना, जब भी करता हूँ. This face is when bakwas, bullshit words are gonna start, and he's gonna hide behind the bullshit. His actions, क्योंकि इसने कुछ खास, इसने एक पता है, एक और वीडियो है यूट्यूब पे, एक बंदा इसको किस करता है, एक बंदा मैन गे होगा, वो पकड़ के इसको किस, हो सकता है गे ना भी हो वैसे, इट्स नॉट एक्चुअली ट्रू. मैन टू मैन एक किस हो सकती है चीज़ पे, जस्ट आउट ऑफ एडमिरेशन, क्या लव यू मैन, कम ऑन. तो उसने कैमरामैन ने इसको किया, उसने पंच मारा भाई उसको खिंचा के. तो ये वायलेंट है शुरू से. इसका वो वीडियो वायरल क्यों नहीं हुआ फिर उसी टाइम? ऐसे पंच मारा इसने उसके मुंह पे, उसका हाथ दे ना बड़ा है. इट्स अ फकिंग एनिमल, चिंप. या सो उसको पंच मारा इसने. तो ये हमेशा से वायलेंट, ही इज ऑलवेज बीन वायलेंट मैन. सो या, तो हाँ, जब ये ना
फिर से इसने बकवास शुरू कर दिया कि मेरा सेंट्रल ट्रॉमा है. भाई इतनी बड़ी, अगर इतनी बड़ी चीज़ होती ना, अगर तू इतना हाई लेवल मॉरल तेरे स्टैंडर्ड होते, हाई लेवल मॉरल स्टैंडर्ड, तो तेरे एक्शन इतने गंदे नहीं होते. तू बहुत अच्छी तरह एक्ट कर रहा होता. फिर ऐसे तू जानबूझ के नहीं मारता. और अगर मारता, जो कि देखो एक्शन करने से पहले अगर तुम ओवर थिंक कर दोगे तो फिर एक्शन भी नहीं कर पाओगे. तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसने मार दिया तो लाइफ ख़त्म हो गया, कुछ हो ही नहीं सकता. लेकिन जिस तरह की अपॉलॉजी चल रही है, इट्स अ जोक मैन. ये जिस तरह की अपॉलॉजी चल रही है बिल्कुल भी अच्छी अपॉलॉजी नहीं है. इस अपॉलॉजी में और दम होता. और ये अपॉलॉजी सिर्फ, जैसे मैंने पहले भी कहा, सिर्फ वर्ड्स तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रहती. कुछ एक्शंस भी होते, रियल लाइफ एक्शंस दैट वुड मेक अ फकिंग डिफरेंस, दैट वुड टेक एन इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ क्रिस रॉक एंड अदर पीपल, which would show that Will Smith has a big heart, but he doesn't. He has a big body, but he doesn't have a big heart. Or maybe he doesn't have a big enough because Jada left him. Maybe he does. The size does not matter. The heart of a guy matters. Yes, he must be having a big, but he doesn't have a big enough heart. So he doesn't have the heart of a lion heart. You should do that movie. That Mel Gibson did. So have a big heart, do some courageous thing, do an apology that has never been tried by anybody, apology that has never been done by anyone. Unmatched, unparalleled, man. Come on. I let people down. So it... Bakwas, it's not true. You don't care about anybody else. You just care about yourself. You don't care about anybody else. You're a fucking liar. It hurts. It hurts me. Then why can't we see it? Why aren't your actions showing it? Your actions are just limited to a fucking babbling on a fucking video with clothes that say W. You're fucking arrogant. You are so arrogant. You are such an arrogant man. Shouldn't live. Die, man, die. Psychologically and emotionally to know I didn't live up to people's image and impression of me. And all you can do is cry. See, जब कोई ये बोलता है ना कि मैं निराश हूँ कि मैं अपनी इमेज और अपने मेरे स्टैंडर्ड तक नहीं जी पाया, that does not mean any fucking thing. अगर तू सच में निराश होता, if you were really sad about not living up to the standards, you would start fucking living up to the standards, man. But you're not doing it. You just hope that a fucking apology video would give you fucking soft corners in the hearts of the people and everybody would forgive you. But it's not gonna happen, man. It's not gonna fucking happen because the action that you did was so much fucking intense that it cannot be repaired and reminisced by a fucking video. It cannot melt our hearts for you. A video won't do it. A video, even in the video, you are not doing anything. Video से भी हो सकता था अगर तू थोड़ा सच्चा और apology में थोड़ा दिलदार होता तो. Even you're doing a coward apology. It's a coward. It's a bitch apology. It's a shit apology. It's a shopology. Shit apology. Curb your enthusiasm. It's a shit apology. It's not an apology. Do an apology. You're not doing an apology. Do an apology. It's a shit apology. It should be a better apology. It's not a better apology. It should be a great apology. It should be the greatest apology. Episode of Curb Your Enthusiasm. Come on. The work I'm trying to do is You're not doing shit! You're just barking! And making faces that would make us feel that you're really doing something, but you're not doing shit. For 3 months, you're a fucking ghost. Nobody knew what you were. We forgot about you. Incident was in our minds that a fucking idiot did something really stupid, and he's fucking hiding now. And now you're closing your eyes like a fucking saint, trying to prove us that you're a saint by showing that you apologize, but not. Apology doesn't come from words, it comes from actions, and the words are not actions.
your words are not strong enough, they're not intense enough that they could be considered as an action. तू सिर्फ ड्रामा कर रहा है, बकवास कर रहा है, और मेरे जैसे समझदार लोग इस बकवास ड्रामे से नहीं बेवकूफ़ बनने वाले. हम जिएंगे तेरे अगेंस्ट जब तक तू नहीं सुधरता. Deeply remorseful, and I'm trying to be remorseful without being ashamed of myself, right? Exactly! Exactly! Hey, you said it! You fucking fearful, selfish, I would say. Not fucking selfish, man. You're saying without being ashamed. Why not being shameful? That's you brought shame to your name, to your family, to your house, to your race, to your country, to the world, to the human race, to the universe, as big as you can take. You brought shame to God, that God sent you, God made you, and this is what you do. God didn't make you for this. That God didn't make you for this. And you're saying without being ashamed. ये कहता है कि बिना shame हुए. जब तक shame होगी नहीं तब तक action में intense आएगी कैसे. मैं कह रहा हूँ मैंने word पहले ही किया था यूज़. मैं इसको shame बोलना चाहिए था, और अब ये word वीडियो के end में just खुल चुका है जब ये बोल रहा है कि without being ashameful, कि मैं बिना ashamed हुए. क्यों भाई, ashamed होना क्या कोई गलत बात है? अभी इसने एक नया concept लेगा कि life में ashamed नहीं होना चाहिए. Just own your actions, but you're not even owning your actions. You're fucking hanging like a pendulum. Oh, I did bad. Oh, I'm sorry, but I'm not ashamed. But I'm sorry. Oh, I might do it again. But oh no, I won't try to do it again. Oh, I don't want to be ashamed. But it's a shameful action. You're a fucking pendulum, man. Black pendulum. You're a blendulum. Black pendulum. Blendulum. So. What was I saying? Yeah, don't flip. Sorry, be ashamed, because it's a shameful action. You gotta be ashamed. When we do a mistake, we must be ashamed to realize the intensity of the mistake, and our intention should be visible, that we won't be doing it again, or we won't be doing it. Forget try our best. We won't be doing it again. Yeah. So why not? Kyun bina shame ke? Why not be shameful, man? That would prove the apology. That's what I'm saying. Shame feeling will prove it's an apology. Without the shame feeling, it's not apology. It's nothing. It's just drama. Bina remorse ke, बिना बैग के, बिना हम्बलनेस से कैसे हम मान ले कि तू सच में फील कर रहा है जो तू बोल रहा है. तभी तो तेरे एक्शन ज्यादा बड़े नहीं हो रहे अपॉलजी के. I'm human, and without being ashamed of myself, right? I'm human. अब वो बकवास शुरू होगी. Oh, I am human. I can make mistakes. ये सारा पढ़ के आए, इसके दोस्त हैं. ओ भाई तो अपॉलजी वीडियो बना, तो एक बिहाइंड द सीन वीडियो रिलीज करो भाई इसकी, जो सारी बात अगल सॉरी तोतला, अगर ये रियल होता ना तो ये व्लॉग करता, व्लॉग उसी दिन के बाद कि यार मैंने कर तो दिया, मैं दोस्तों से पूछा क्या करूँ क्या नहीं करूँ. उसके दोस्त जब डिस्कस करते थे ना कि ओ इतना नहीं बोलना, इतना कुछ गलत भी नहीं करा तूने, समझ रहे हो. तो इसके दोस्तों ने इसको सजेस्ट किया होगा कि ये कि इतना भी नहीं बोलना, और फिर बाद में बोल दियो कि ह्यूमन भी तो है तू. गलती ह्यूमन से होती है, हम गलती करते हैं, गलती हो गई, इट्स नॉट अ बिग मिस्टेक. इसको बार बार ये फील कराया जा रहा है कि इट्स नॉट अ बिग मिस्टेक, और ये भी खुद को फील करने की कोशिश कर रहा है, पर इसको पता है बिग है. पर ये जब इसने डिसाइड ही कर लिया है, व्हेन ही हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड इन हिज हेड दैट इट्स नॉट अ बिग मिस्टेक, then of course his apology would be a puny apology, and that's why he would say I'm not ashamed, and that's why he's gonna
prove by weird and old shit logics that I'm a human makes mistakes. जब तुम्हारी mistake छोटी होती है, then that sentence is valid. And they are small mistakes. I'm human. It happens. Yeah. Big mistakes, humans shouldn't do. Animals can do. Animal can fuck his own mother because it's an animal. But as humans, you would not expect it because you know that we are humans. We are not supposed to do these actions, these high intensity actions that you did. You just fucked your own race, man. You're a race fucker. Race fucker. Which is weird because he slapped a black guy. Racist white people would be laughing. Fighting among themselves. Black people who are sad would be thinking, man, he hit our own brother. See, of course I'm beyond race. मैं यहाँ पे race कर तो रहा हूँ. Of course, white or black में कोई फर्क नहीं है. There's no difference between white and black. But what I'm saying that without any inequality, still a small identity exists. Without identity, actions cannot be possible. So this, we can just say that it must be, I'm just exploring all the angles that exist after this event, that people must be seeing this event through all these angles. Like some would be thinking like, he hit one of our own. Some would be thinking it doesn't matter who he hit, hitting is wrong. So all these angles I'm just discussing, and just because and because it's a wrong action, these angles are equally valid. If it was a right action, of course we can say this is a better angle than this, better angle than this. It's a wrong action. Again, okay, even in a wrong action, there are better angles and hierarchy of angles, but all the angles will be explored to prove that it's a wrong attack will be done on Will Smith from all the angles so that such actions are not repeated in the future. That's what I mean. Yeah. So, yeah, sorry about that. So, turning into Will Smith. Yeah. So, yeah. Don't say human. Cowards bring human logics and shit. And I made a mistake. Blunder! You made a blunder! It was not a mistake, it was a blunder. And the fact you think that your mistake can be forgiven is a lie. It's not lie. It's again a mistake. You thinking that your mistake can be forgiven. You must be punished. Punished. Without punishment, you would never learn. Never. And this interview of yours, it's proving that this video, that you have not improved, you have not changed. You're still the same guy who's trying to justify a blunder, and in return would just agree to talk and say, I'm sorry, but what you did was wrong, it was an insult. He would say, you're right. He would argue, but it was still wrong, because in his heart he still thinks he was wrong. Chris was wrong, and he's just making this video to calm down the people so that he can face people again. लोगों को फिर से मिल पाए, देख पाए, उसके लिए एक वीडियो बनाया कि भाई देखो अपॉलजी कर देना, अब तो छोड़ दो. पर अगर तू पनिशमेंट लेके आए ना यार, तब सभी लोग मना कर देंगे, क्योंकि फिर लोगों को सैटिस्फैक्शन होगा, पनिशमेंट मिली, फिर लोग क्रिस रॉक को भी कहेंगे हाँ पनिशमेंट मिल गई, काफ़ी ठीक है. I would say 3 months in jail. 3 months in jail, that's it. 3 months in jail, I would suggest Will Smith to go to for rehabilitation, to make it up, salvation, redemption. I'm trying not to think of myself as a piece of shit. So because you are.
You are. You even look like a piece of shit. I would say to those people, Not a race thing. Like he's ugly. That's what I mean. I know it was confusing. I know it was shocking. But I promise you, I am deeply devoted and committed to putting light and love and joy into the world. And, you know, if you hang on, I promise we'll be able to be friends again. Promise, you know, if you hang on, I promise we'll be able to be friends again. Hang to put. He's so arrogant. This guy thinks. See, that's why I cannot make this video, because they're so tiring, man. Then again, they are so fruitful as well. So yeah, let's make it. Don't be a lethargic, lazy loser, okay? This guy's so arrogant that first of all, he, for the first identity, makes a huge blunder. Now with the second identity of being first of all, angry husband, so-called boyfriend, which we all know the woman is not in love with him still, he thinks. So with that identity, he hits the guy. Now the second identity of being a human, he is justifying his action. And I'm all saying some racist bullshit here just because he deserves it. Because when you do something bad, then lines are off, man. Then lines are off. Then there are no lines. Because you didn't care about anybody in that action. Why should I care about you? I wouldn't care about you. I wouldn't care about saying anything to you. It doesn't matter how hurt you get, because you deserve hurt. Because when you know what hurt is, you're going to realize how it feels to other people that you hurt. So he is so arrogant that first of all, he hits someone. With second identity, he justifies his action, saying he's human. And thirdly, he demands the victim, if you hang on, we'd be able to be friends again. See, that guy would only be your friend when he feels that you've been through a hell like he has been. When the quality and quantity of being in hell is equal when it equalizes. After an equalizer, a new game would be played between you two. Till then, no games. So you want an easy exit from this. He thinks, ये सोचता है, आया, Chris Rock. Oh, Chris, I'm sorry. Yeah. Man, but फिर गंदा joke मारेगा, क्योंकि he's not funny. Funny है नहीं. Yeah. You want food, man? Yeah, it's funny. Yeah. And everything is forgotten. No. The hell must be equalized. A lot more apologies, a punishment, a proposal, like you propose to your girlfriend, billboards, movies, content to propose Chris to be friends again, which would show that you are really sorry. He's making such a great setup. The background, the mic, it's not even on his face, has put some really good pre-gain on it that his voice can be captured. Hello. It must have been a mic test and everything. He's showing his fucking setup and money and everything with a fucking Will hat on. Cap on. It's not a hat, it's a cap. Can you show some humbleness, man? You should be here in fucking Sando. Like shirtless. You should be shirtless, capless, should not take bath, should look like shit, and then apologize that I'm in such a place in my head. I'm in shit, man. I look like shit.
What to do? Help me, Chris. Please help me. Yes, yes, yes. If you ask Chris for help, then he would feel he's at a higher position. Now you're saying, if you hang on, if you're asking someone to hang on, it means they are weak. They are fucking, I'll save you if you hang on. You're asking, whenever you're ready, I'm here. It means he's weak. You're giving Chris all the weaker identities and weaker egos, and giving yourself all the positive and stronger egos, which proves that you're not apologetic. You still think you did the right thing. Do you see my fucking great psychological analysis? All the egos that he's given to Chris are weak, and what he isn't, that I brought hate to you, I brought hurt to you, I did this, but I'm a human. I make mistakes. I don't want to feel like a piece of shit. If you hang on, we'll be able to make friends. I'm here for you. All these 7 egos are all positive egos and stronger egos. And when he goes, if you hang on, when you're ready to reach out, it means he's weak. You're giving Chris negative and weaker egos. How will he feel good after this video? He'd fucking be more irritated. Then this video has only made his chances and his image worse. And after my video, it's gonna be way more worse, because I've dug out all the deep nuances and complexities that are in the mind of Will Smith. Hang on. How arrogant are you, man? Shut up, Manishi. Shut up. I don't want to be ashamed. I don't want to feel like a piece of shit. Putting light and ऊपर से ये बकवास, मैं devoted हूँ. भाई तू light और love देने के चक्कर में फिर लोगों को पीटता क्यों फिर रहा है? If you want to give light and love, why are you hitting people? You should forgive people. Love means forgiveness. I forgave a guy yesterday, even though he acted shit to me. I forgave him. I still shook his hand. And know what? He smiled. He was happy that we are back again. That is forgiveness. You hit a guy. After Chris Rock forgives you, he would only be looked greater. You will always be looked bad, because, man, to be honest, you're not helping yourself. You're not making content on apology. You're not making big decisions. You're not, it doesn't look like. You look great with great clothes and stuff. You are only showing off that you are Will Smith. You are so secure about your future that your apology means shit. If you are really insecure about your future, that nobody would work with me, everything's gonna ruin, you would understand the amount of hurt you cause someone. But you are so arrogant. But you know what? I mean, your downfall, the downhill has started after this event. And this video has accelerated it. And it's gonna get worse till you really seek help from someone like me, or from God, if God helps you. After then, only then, you'd be saved. Because it's looking really bad from my side, man. You're shit. You're a piece of shit. love and Even though you're not trying to be. joy into the world. And Fuck you, drama. Bullshit words, just words. Nothing in reality. and you know, if you hang on, This see his body language. If you hang on, this phrase came into his head, and he thought it's the perfect phrase, and it's not. It's like, what would you call to someone? What would you say about someone if when the action of violence comes in his head, his face lights up? It's a violent phrase. and If you hang on, as I told you, he's giving a negative and weaker ego to Chris, that you need to rehabilitate. You need to rehabilitate. You need to be stronger. You need to hang on. Then we can start life together. You are the one who has to do work, wherein who has to do the work, not him.
So this negative violent phrase, when it comes to his head, his consciousness, if you hang on, he doesn't save a second. He doesn't waste a second to not say it. He just say, if you hang on, it means he's a violent man. Still a violent man. Nothing has changed. You know, And change of heart, it goes slow. Change of heart, it goes slow. if you इतनी जल्दी नहीं इंसान मैच्योर होता. if you 3 महीने में. hang on, I promise we'll be able to be friends again. Fuck you. And this sentence, that the last phrase, and that gives expression on your fucking face that you said something really great. You fucking idiot. You said the worst thing in the world that only makes you fucking look more of an idiot. Fuck you, and thank God this video is over. बढ़िया भाई, खत्म हुआ ये टट्टी. क्या बकवास थी भाई, क्या था ये, बिल्कुल ही बकवास थी. थक गया मैं, लेट गया बनाते बनाते, इतना बोलना पड़ा. Anyway, अब thumbnail बना के अपलोड करता हूँ. See you again guys in the next. Fuck. thumbnail बना के अपलोड करता हूँ. देखो तुम वीडियो, बताओ कैसा है. Tell me in the comments how right I am in all of my analysis.